Now what is religion? How many of you have some or the other religion? Ma'am, do we have to write everything? Anju? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लिखना है. हाँ. What is religion? Set of beliefs. Okay. And practices. Okay, Ajay. ठीक है. It binds people. Okay. Binds people how? They feel a bond with each other. People of one religion feel a bond with each other because they share same set of beliefs and practices. हिंदू मिले दिवाली मनाए, Islamic people मिले ईद मनाई. So there is a set of beliefs and practices. What is otherwise shared? Culture and festivals. वो इसी में आ जाएगा. Culture, festivals, all of these things. Okay, what else? A way of life. ठीक है. A religion is a way of life. When we say way of life, what does it mean? जैसे हम जीते हैं. We wash hands like this, है ना? When Muslims do wuzu, they do it like, what is this? Way of life. Simple. What do you do in the whole day? Starting from morning to night. How do you do? You eat like this or you eat like this, you eat with a spoon. How do you eat? Another way of life. How do you conduct your own relationships? All of this. ठीक है. Otherwise, what else? Yes, a belief in existence of a power higher than ourselves. Religion का एक काम ये भी तो है ना, that it helps us believe in power higher than ourselves. हमसे ऊपर एक पावर है जिसकी हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं. कृष्ण, जीसस, अल्लाह, यावे, all of these. They are the central points of religion. Okay. Faith and reason. अरे आएंगे बेटा, तो पहले से पढ़ के आ गए हो क्या? Religion also includes some kind of a spiritual experience, isn't it? Yes, बहुत अच्छी बात बोली है कार्तिकेय. Spiritual experience. Tells us what is right and what is wrong. पाप और पुण्य. ये तुमने सही किया, ये गलत किया. This is sinful. This is praiseworthy. God will love you. So right and wrong. और right and wrong बताने के बाद क्या वो बता देते हैं, खत्म हो जाती है बात? It should be connected with some prize or punishment. पाप करते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नरक में, दोज़ख में, हेल में. और अच्छे कर्म करते हैं तो कहाँ जाते हैं? हेवन, स्वर्ग, है ना? और क्या होता है? जन्नत. यहाँ जाते हैं. So there should be some or the other punishments or the prizes that have been declared. अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, और अच्छा करोगे देव बन जाओगे, और अच्छा करोगे इंद्र बन जाओगे. So there is some linked. Okay. Concept of repentance. So we can say there are certain values.
along with it certain values that are given by religion. सच बोलो, सबसे प्यार करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ना, लोगों की मदद करो, be compassionate. All of this is what? Values promoted by religion. Okay. Search our meaning of life. Yes, religion tells us the purpose of our life. Very good. It tells the purpose of our life. देखो हमने ये सारी कहानी करी. Can you understand religion a bit now? What is the most important thing? That religion tells you what to do. Tells you what to believe in and what to practice. ऐसा है, दुनिया ऐसे बनी है और ऐसे चल रही है, ऐसा करो. फिर वाइब्स, जो लोग उनकी बात मानते हैं, जिस तरीके से मानते हैं, वो साथ में चलते हैं. और ये सब किसने कहा है? ये सब किसने बताया? सम पावर हायर देन आवरसेल्व्स. हमने खुद को तो नहीं बताया, ईश्वर ने, अल्लाह ने बताया. Some power higher than ourselves. Then when we start believing, we have some kind of a spiritual experience. Way of life, again it tells us right and wrong. It tells us punishment and prizes are already told to us कि ऐसा होगा. Values बता दी, ऐसा करो. Purpose बता दिया हमारा. Is there any way you can apply लॉजिक? कैन यू से ये लॉजिकल नहीं लग रही प्रैक्टिस, मैं नहीं कर रहा, ऐसा कह सकते हैं क्या? रैशनल, आर्ग्यूमेंटेटिव, क्रिटिकल. कैन यू क्रिटिसाइज रिलीजन, गॉड विद इन द सेटअप ऑफ रिलीजन? कैन यू एनालाइज इट? यू सी हाउ डिफरेंट is the domain of philosophy and religion. You understand this? They are nearly very separate things.